theme of Splitsvilla this year? I actually, first, good evening, everyone. Thanks for coming here. I hope you like the promo. The promo in itself, you can see that when Sunny is playing her game, there is a warrior, that is me, that is fighting for her, which is how every woman in this country, in the world, should feel like that they have somebody fighting for them. And in the takes a throne, and there's another, the lady that she was fighting with, she's also taking a throne. So clearly in the promo, it's expressed that this is Splitsvilla 9, where women rule. And I was really happy because since there is an empress in my life and there's a queen also, the empress is my mother, because I, while growing up, was taught by the actions of my father as how you should care, respect, and be there for a woman. And so I was like, oh, this is great. And then I got married, and now my wife pretty much rules my world. Through that, she does. And I see that in Sunny's life also. When we host a show where we'll wait for them. They're also working hard. We're that fast. Now it's like we went to another place. How about that? One picture we were somewhere else, now we're... So on this show we have 15 celebrity boys that some of you must have seen somewhere, and there's 6 princesses to start with. This is a world which, according to me, should be the entire world, though it's a small Splitsvilla world, where boys are doing everything to impress these princesses. They are, with their skill, with their talent, with respect, with dignity, doing things for the princesses, and I think somewhere realizing that this is how life should be. Looking at them, I have a feeling a lot of their followers, our followers, and MTV's followers will be like, okay, this is how you're supposed to be with women? I didn't know that, but thanks. So I'm really happy that the whole concept is where women rule, and boy, we've seen some crazy things this season. It's been amazing. Wow, so exciting. All right, both of you are not just hosts of the show, but in a way, y'all are mentors to these contestants as well. So how was it this time playing host and mentor to the contestants? I mean, I don't see myself as a mentor when I'm talking to these kids, or the contestants. It's more about, you know, helping them see a different perspective. क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं, or you're getting angry at something, or you're in the heat of the moment and कुछ भी बोलते हो, sometimes you lose perspective of what the actual truth looks like, or, you know, so I do believe that we provided that outside look into, you know, the situations that were happening, because there were so many different situations. We were like, "Aise ye kya ho gaya?" And we would sit there and laugh. You know, some of the comments that these contestants would say, and some of the things that they would do, they're doing them because of that spur of the moment, the heat of the moment. I'm sure you can elaborate as well. See, because Sunny and I are not playing characters, like we're not some characters which was written in a script. A lot of times when something pleases us, we express ourselves. Like if somebody's done a good job, we're like, very good, I'm really proud of you, I thought you could do it, and you finally did it. And there are times when you're disappointed with some people's behavior, and not as mentors, but as human beings who have a certain ideology, we kind of correct them. Whether they do listen to us or not is their priority. It's up to them. But we express ourselves, and that's why more than hosts, sometimes you might feel that because we have our own opinion. But it's fun because a lot of situations are put out there, and then me and Sunny are just like, should we get some popcorn, because this is really interesting. So there are times when we just stand back and just watch these contestants, the boys and the princesses, just do their thing, and it's just, we don't even have to do anything after they're in a situation. Literally, we would stand there for 15-20 minutes going, "Ye kya ho raha hai yaar?" And we have a handshake when that happens. We cross our fingers and we do a fist bump. Yeah. Code language, that's nice. All right, Sunny, third time in a row hosting Splitsvilla. What's new this season? First of all, congratulations. We love you at MTV, clearly. Tell us, how is this season for you? This season was, every season is so different, and this season we were in Pondicherry, and we stayed at the most beautiful resort in Pondicherry, and the hospitality down there and the way of life down there was
it was fun to be able to be a part of Pondicherry in so many different ways. And Splitsvilla this year, we have the most amazing looking contestants. The women on the show are all beautiful. The guys on the show, they all have like six-pack abs. I don't know how they maintain those six-pack abs in 30 days, because at the end of it, you know, everybody's eating rice, production food. So I these six-pack abs, but they did. We had some really shocking moments. I am very emotionally attached to a lot of the contestants, and which is just how my personality is. And I would laugh with them, and also if they started crying, I would get also teary-eyed. Can I elaborate on that? Yeah. Because that's one thing that I want to tell about Sunny. Like how Galen said, we at MTV love you. And from the channel side, I can say that as a host, when you're involved in the stories of the contestants, all the boys and the girls, it comes naturally. And that's what Sunny, you know, does. She comes on the set and it's not like, okay, what is happening? What happened? No, tell me. When a guy is saying something, she knows exactly why that guy is saying that. And then she can also say, but didn't he say this yesterday? So as a host, it becomes very natural to be part of that story. And that's why, you know, I think we do this because we're involved. And I must say, it's a pleasure working with Sunny. Aw, Thank you so much. Amazing. That Talian. You. Sunny, this year's theme, as I asked Ranvijay earlier, is where women rule. What does it exactly mean to rule? I think ruling means making tough decisions, making decisions you don't want to make. Also, making decisions for the betterment of your kingdom. Well, at least. At the end of the day, this is a show about young people that come together. They're all put in different situations, different competitions. Hamare patatero sessions, where they get to know more about each other. So even though it is where women rule, if one of our queens or one of our princesses Faida Utaya of that power. We would also say, you know, just because you have this power doesn't mean you can abuse it and treat one of the warriors or one of the boys in this manner. That's not the way that a princess should be, or a human being should be. So it wouldn't all be in favor of the princess. Agar kuch galat karte, then we would correct them as well, or say, you know, you're seeing it this way, but maybe he's also. We defended the boys a lot. I think there were a lot of instances. With power, sometimes people don't know what happens to them because they've never had that, or they don't know how to respect power also. So we try to maintain a balance between the two, because sometimes if the boy is not wrong, but just because you have power, the girl was. So we'd say, hey, why don't you listen to his side of the story? But in the whole experience, there was a lot of connections, which is love, friendship, betrayal. We saw the most beautiful acts of friendship in this season that I haven't seen in the previous seasons, or just maybe on television, you know. And we've seen brutal betrayal also. Well, Yes. speaking of friendships, I hear that there are 3 very good friends here, somewhere in the audience. Is that right? We have 3 very good friends, and we're speaking about where women rule, and it's only fair that we call them up on stage. Can we have...
सर आपका इस कन्वर्सेशन में आपका बहुत स्वागत है एंड वी वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस न्यू सीजन। Thank you so much. So sweet of आपसे you. जानना चाहेंगे इस न्यू सीजन में क्या खास है, क्या नयापन है? इस नए सीजन का जो थीम है वो है विमेन रूल। और सनी और मैं ये बिलीव करते हैं कि हमारे देश में बहुत जरूरत है ऐसी बातों के बारे में बात करें और वो एक एग्जाम्पल से दिखाएं, चाहे वो शो एंटरटेनमेंट हो या कुछ भी हो। जितने भी हमारे लड़के हैं, 15 लड़के हैं, सेलिब्रिटी लड़के, उन लोगों को एक तरीके से, एक रिस्पेक्ट से, शिवलरी से सारी लड़कियों से बिहेव करना पड़ा और उसकी वजह से उनमें भी बदलाव आया है। और मुझे लगता है जितने हमारे फॉलोअर्स हैं या जितने भी लोग एमटीवी देखते हैं, शो को देखते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि काफी लोग अवेयर ही नहीं है कि किस प्रकार से आपको बात करनी चाहिए। रिस्पेक्ट होती है, शिवलरी होती है, आपको अपनी जो आपकी लाइफ में वुमन है, चाहे वो आपकी मॉम हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो या सिस्टर हो, उनके लिए हाउ यू हैव टू स्टैंड अप फॉर देम, उनके लिए कैसे आपको फाइट करना है। एंड इन आवर ओन वे स्प्लिट्सविला कहीं ना कहीं वो करता है। मजे भी बहुत आए, पर आई थिंक देयर इज दिस सबकॉन्शियस मैसेज ऑल्सो। सनी व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? सनी, आपको इस देश ने बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया है। इस देश के कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपको सम्मान दिया है इस देश ने? I love India. I don't think that एक ऐसी जगह होती that I wouldn't get as much acceptance as I've gotten here in India, and it's the truth. क्योंकि I've been to different countries and I've worked in different areas in the world, and this is where I've gotten the most acceptance. इतना प्यार, इतना support मैंने कभी सोचा नहीं है, and for that I'm forever thankful to all the fans. मैं बहुत इमोशनल होती हूँ, मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ। एक्चुअली सनी के बारे में एक चीज है कि वो हर बार अगर कुछ भी एक शो हो या अगला शो हो या उनका कोई और इवेंट या कोई चीज वो कर रहे हैं, शी इज वेरी ग्रेटफुल। एंड जैसे आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल है, शी इज ग्रेटफुल। और हमारी आपस में जो नॉर्मल बात होती है एज फ्रेंड्स, यही बात बाहर आती है कि जो भी उनको अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है और इस देश ने, और शी इज रियली ग्रेटफुल। शी इज वन ऑफ द पीपल दैट आई मीट। और इनके एग्जाम्पल में बाकी नए कंटेस्टेंट को, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उनको बोलता हूँ कि यार लुक एट दिस, कि आपको जब कुछ मिलता है यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, एंड शी इज वन पर्सन हु ऑलवेज डज दैट। Splitsvilla is, I'm just going to answer his question really quick and then we're going to come right to you. Splitsvilla का journey इतना अच्छा था। हर साल ऐसा ही होता है। We have so much fun. Last year we had a great time. This year, no exceptions. It was so much fun. For me especially, there's so many things that go wrong throughout the year. ये movie अच्छा होता है, ये movie नहीं अच्छा होता है. Different things that you want to do and they don't always pan out the way you want, और बहुत सारा drama भी होता है life में. So for 1 month, I escape my own world. I go into Splitsvilla and I enter the lives of these contestants, and Ranvijay and I, we watch these contestants from day one. जो बातें करते हैं, जो उसके सोच में है, क्या उसके opinions क्या है, to the very last day, which is a complete transformation is what happens at the end. Yeah, the growth of these contestants ना, ये देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि यार look at the passion जो आज के यूथ में है, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं लोग, वो यहाँ पर आके एक्चुअली कर रहे हैं। किस एक्सट्रीम तक कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उनको एक सिचुएशन देते हैं, कॉम्पिटिशन टास्क देते हैं, और उसके बाद दोनों हम 10-15 मिनट का ऐसे देखते रहते हैं और ऐसा लगता है कि हम एक शो देख रहे हैं। यू नो, इट्स सो एंटरटेनिंग, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक इंसान कैसे आया था, उसने कैसे ग्रो किया, कैसे कॉन्फिडेंस उसमें और आया, कैसे उसका जो पर्सनालिटी बाहर आया और वो जीतना चाहता है किस हद तक। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Also they come with their own set of baggages, जो उसके लाइफ में हुआ, जो उसके experiences होते, and that all comes forward as well. And sometimes that works for you, that works for them, but sometimes, most of the time, it doesn't. क्योंकि वो जो baggage होता है आपके mind में emotionally, you bring that forward in the next relationship or connection. And this show is about connections, and it's about friendships or romance, however it works out for each person. Hi, I'm Sunil from Movie Talkies. I would like to ask you what personality resemblance you find with the show in you. In me? Yeah, of course. I don't think that you could pinpoint a And personality. you're anchoring the show, that's why I asked. And also you're doing you're playing as a role of mentor. So what do you think? As what? Mentor. Oh, mentor. I don't think you can pinpoint one characteristic, because as the show develops, as each patate ro session, as each dumping or each competition that happens, Ranvijay and I we go through the emotions with each of these contestants. And to pinpoint one thing, I think it would be wacky, cuckoo, crazy. I don't know.
कई बार लगता है कि मुझे पकड़ना पड़ता है सनी को, जब वो कंपटीशन चल रहे होते थे बीचेस पे, तो मैं ऐसे करके ये करती हूँ, फिर मैं ऐसे करती हूँ. सो आई एम लाइक, देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स शी गेट्स एक्साइटेड जब एक परफॉर्मेंस हो रहा होता है, और वो हम लोग काफी बार आपस में डिस्कस करते हैं कि यार इस पटाते रहो सेशन, और इस हिसाब से करता हूँ, और शायद ये फायदा होता है फिर उन. तो हम लोग हमेशा अपने आप को, वी ट्राई टू पुट आवरसेल्व्स देयर, एंड हमेशा लगता है कि अगर हम होते तो वी वुड हैव डन बेटर. मैं एक्चुअली बहुत ही इंस्पिरेशनल मानता हूँ इनकी जर्नी. जब से ये इंडिया में आई, शी वाज द स्वीट हार्ट ऑफ द कंट्री, सबको बहुत भाई. बट उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि अब ये क्या करेंगी. फिर उन्होंने मूवीज की, मूवीज डिड रियली वेल, एंड लास्ट ईयर मेरे को मौका मिला इनसे, इनके साथ सिर्फ मिलने का नहीं, काम करने का और एज अ ह्यूमन बीइंग जानने का. पागल हैं, कभी खुद भी करना चाहती हैं कंपटीशन, और लाइफ में क्या क्या चाहती हैं. शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग वुमन. अब मुझे अच्छा लगता है कोई भी हो जो इस फील्ड में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनकी इज्जत करती हैं सारे क्रू की. क्रू लव्स हर. तो मेरे हिसाब का जैसे वर्क कल्चर है वैसा है. कभी भी मुझे वेट नहीं कराया. हम लोग कम से कम 6 घंटा धूप में खड़े होते हैं. पिछले साल गोवा में थे, तपती धूप में, और इस साल पौंडीचेरी में, जहां पर बहुत खूबसूरत है लेकिन मौसम बहुत ही गर्म था. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार कोई चूचा हो, सॉरी आई एम जस्ट सेइंग, कि ऐसा हुआ कि कोई प्रॉब्लम हो गई है. शी इज ऑलवेज देयर, वर्क्स फॉर द क्रू, फॉर द कंटेस्टेंट्स, और बहुत इन्वॉल्व है अपने काम में. कि ये नहीं कि अच्छा आज क्या लाइन है, बिकॉज ऐसे शो में एज अ होस्ट आपको पता होना चाहिए कि किसकी क्या स्टोरी है, कौन सा कंटेस्टेंट किसको लाइक करता है, क्यों इस लड़के को लाइक नहीं करता है. की वजह से वो पूरा जो प्रोडक्ट निकल कर आता है एज होस्ट हमारे लिए, दैट्स अमेजिंग. सो आई रियली थिंक हर जर्नी हैज बीन इंस्पायरिंग. वेरी प्राउड ऑफ यू. डंपिंग, इस बार सबसे बड़ी बात है कि पहले किंग और क्वीन होते थे. किंग लड़कियों को डंप करते थे और क्वीन लड़कों को. बट इस साल देयर इज नो किंग, सिर्फ प्रिंसेस हैं. प्रिंसेस नेवर गो बैक, दे नेवर गेट डंप. ठीक है, लड़कों के पास वो पावर ही नहीं है. इस बार वेयर विमेन रूल में लड़कों को सब कुछ करना पड़ेगा एक अच्छा कनेक्शन करने के लिए. लड़कियां कम है, सो दे हैव टू वर्क हार्डर. जैसे आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही पूरा कॉन्सेप्ट है. और बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए. अगर कनेक्शन अच्छा है तो आप आगे जाएंगे और जीतेंगे. एंड दैट्स द बिग डिफरेंस. और उसके ऊपर से आई थिंक बिकॉज बॉयज हैड टू इम्प्रेस गर्ल्स, लड़कियों को भी समझ आया कि अगर आप लड़कों को अच्छी तरह से ट्रीट करोगे तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट ही मिलेगा. एंड दैट वाज ग्रेट टू सी. एंड उसकी वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो. मैं इस शो में हमें कितनी रियलिटी देखने को मिलेगी इस सीजन में, कि हर बार ऐसा होता है कि जो कनेक्शंस होते हैं वो शो के बाद टूट जाते हैं, तो इस बार कितनी रियलिटी होगी इस शो में? Well, I think when you're dealing with, first of all, when you're dealing with contestants जो इस उम्र के होते हैं, in the age bracket that they're in, they change their mind left and right anyways. 1 second they're connected to somebody, next second उसने मुझे betray किया, मुझे ये किया, मेरे साथ ये किया, and then all of a sudden they have a new connection. So that really is how. Even outside the show, स्पिट्सविला के बाहर भी बहुत सारे कनेक्शंस आप देखते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में. आप सेलिब्रिटीज का देखते हैं, some of them don't last, some of them last. तो इट डिपेंड्स ऑन द पीपल. अगर उनको कोई सच्ची में लोग मिल गए हैं जिनका कनेक्शन, बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ आवर ओल्ड स्प्लिट्स विलन्स, कुछ रहते हैं कुछ नहीं रहते, डिपेंडिंग ऑन कौन कहाँ रहता है. कोई बॉम्बे में, लॉन्ग डिस्टेंस. तो ये सब यूथ के अंदर डिपेंड्स ऑन पीपल. एंड वी होप एंड वी बिलीव कि ऐसे कनेक्शंस रहें. We'll do it. You want to do another one? You have 2 more minutes. We have one-on-ones with you guys. We'll do it, guys. Thank you for